Okay, so we are going live on YouTube. Yes, Atul bhai, you can please go ahead. Yes. રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત ત્રિવેણી મંગળવાર મીટના મદ્રાસ ફેડરેશન, ગુજરાત ફેડરેશન અને મુંબઈ ફેડરેશનના આજના પ્રવચન ગુપ્ત સિદ્ધાંત અને આત્મ સાક્ષાત્કારનો માર્ગના વક્તા કેટલીનાજી, શિખર અગ્નિહોત્રીજી, પ્રેમલતાજી તેમજ મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશી તેમજ આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. કેશવરબેન દસ્તુર સભાની શરૂઆત વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી કરાવશે. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આજની સભાની આગળની કાર્યવાહી માટે આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. So much. And एक छोटा सा कैटलीना जी का परिचय दे देता हूँ. She was born in Colombia and at a very early age उन्होंने अपने आप को थियोसॉफिकल टीचिंग्स के लिए प्रेरित कर दिया था और वो यही चाहती थी कि यूनिटी ऑफ लाइफ और यूनिवर्सल ब्रदरहुड रहे. उन्होंने बहुत सारी जगह विजिट किया, अलग अलग कल्चर्स देखे, विभिन्न भाषाएं देखी और सुनी और पढ़ी और उनका पैशन म्यूजिक और लिखने में भी था और है अभी भी. वो एक शिक्षिका हैं और इस वक्त भी अडियार में थियोसॉफिकल एकेडमी से जुड़ी हुई हैं. वो टीएस की मेंबर बनी 2006 में और उनके पेरेंट्स के कारण वो थियोसॉफी से बहुत ही छोटी उम्र में जुड़ चुकी थी. उन्होंने कई कोलंबिया मैगजीन्स वगैरह में आर्टिकल्स को ट्रांसलेट किया है, कविताएं उनकी पब्लिश हुई हैं और सबसे बड़ी बात कि वे इस वक्त यूथ जो हमारा वर्ल्ड वाइड यूथ थियोसॉफी का है उससे बहुत ही सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं. वे शिखर जी के साथ प्रज्ञा सी स्टूडियो नामक यूट्यूब चैनल जो बहुत पॉपुलर है हम सबके बीच, उसके साथ जुड़ी हुई हैं. आइए आज के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इंग्लिश में अपना आप स्पीच दीजिए. धन्यवाद. Thank you very much and greetings, namaste, vanakkam to everyone here. Please, for some seconds, let's just make a little bit of silence just to connect with that higher in us and to connect to the heart to each other. So for a couple of seconds, let's just close our eyes and make some silence. Well, thank you. It is a pleasure for me to be here. I thank TARAL for this invitation, and I thank also PREMLATA ANAND for her translation to Tamil and to SHIKHAR for his translation to Hindi to make this more reachable to more people. And today's subject is a personal overview of the first stanza of the Secret Doctrine in the light of the path of self-realization. As you know, the talk is divided in two parts.
first part, I will be giving like an introduction, then will come the two translations. Then the second part, I will go more in depth in the shlokas of the first stanza, and then the translations to the other languages. So actually, I really believe that studying the Secret Doctrine provides a broad and deep vision of the universe and thus of ourselves. Because as the Hermetic says, as the inner, so is the outer. Oh, Taraji, if you can begin to share. Thank you. Yes, just see the Thank you very much. loading. Okay. You can continue. It will just load in one. Okay. So as we know about the Hermetic statement, as is the inner, so is the outer. As is above, so is below. There is but one life. So to study the Secret Doctrine is a transcendent experience, or at least it has been for me. It's an experience that borders the poetic, mystical, and the frontier of the intelligible. Whenever I read to the Secret Doctrine, I feel a connection in a deep level that transports me to a level of intelligibility, poetry, and a very deep meaning. Always is not so easy to understand for me, but I try to connect with that sense. So words are limitless to express what we really need. Nevertheless, within the limitation of language and my understanding, of course, I will share some personal reflections on it. So, Taraji, if you can share the second slide, please. Okay, let's go ahead, or maybe I will then try to share. The world, yeah, as we know, the Secret Doctrine comes from the book of Xian, or Xian, I don't know exactly the pronunciation. And this word, Xian, is interpreted as contemplation or knowledge through meditation. That is the meaning of the word Xian, contemplation or knowledge through meditation. So that gives us a hint that the attitude that we need to approach the understanding of the Secret Doctrine is the attitude of deep meditation. It is fundamental to approach it like that. It has been mentioned that the stanzas give an abstract formula of cosmic evolution that can be applied to all evolution, to that of our tiny earth, to the solar universe, every form that is in the earth, to the solar universe, to which that change belongs, and so on. So from the microcosm to the macrocosm, in an ascending scale. So by taking forward this study of the Secret Doctrine, we can try not only to understand the cosmos, macrocosmos, and microcosm, but what is vital for humanity, our inner nature, and the possibilities of our Dharma and service as members of the theosophical movement. One of the keys to reading the Secret Doctrine mentioned by HPB herself is intuition. Through a purified and open mind. That way, HPB points out in the poem the following. It must be remembered that all these stanzas appear to the inner faculties rather than to the ordinary comprehension of the physical brain. That is in the page 69. I believe personally that any study that we undertake must transcend the mere intellectual complacency of the concrete mind. Actually, Master K.H. said the following. Then in the third slide,
I share the quote. Truths and mysteries of occultism constitute a body of the highest spiritual importance, at once profound and practical for the world at large. Yet, it is not as mere addition to the tangled mass of theory or speculation in the world of science that they are being given to you, but for their practical bearing on the interests of mankind. That is, this last part is very important that we have it in mind. For their practical bearing on the interests of mankind. Through study meditation, we can transcend the doctrine of the I towards the doctrine of the heart. In applying the teachings related to the cosmos, to the human being, we can use the Secret Doctrine as a spiritual training. We shall undertake its study, keeping in mind that what of the voice of the silence warns us. It warns us like that. Be of clean heart before thou startest on thy journey. Before thou startest thy first step, learn to discern the real from the false, the ever-fleeting from the everlasting, separate head learning from soul wisdom, the I doctrine from the heart doctrine. Look within, you are Buddha. So HPB gives us the secret doctrine to raise our consciousness to the Buddhic plane. Only through that intuition of the Buddhic plane could we have glimpses of something that can enlighten us. The stanza 1, the night of the universe, presents a state before manifestation, the state of Mahapralaya, in which there is no differentiation. As mentioned in the first proposition, that says, an omnipresent, boundless, immutable principle on which all speculation is impossible, since it transcends the power of human conception. It is beyond the range and reach of thought, unthinkable and unspeakable. And in the commentary to Shlok 9 of the first stanza, we read the following. Man, unable to form a single concept except in terms of empirical phenomena, is powerless from the very constitution of his being to raise the veil that shrouds the majesty of the Absolute. Only the liberated spirit is able to faintly realize the nature of the source whence it sprung and whither it must eventually return. The finite cannot conceive the infinite. So it is impossible to unravel the hidden meaning of what we read unless we really meditate on it and we reach a state of self-purification. The deepest truths cannot be expressed in words. They must be experienced. The abandonment of all sense of self-importance is necessary. We must become one with the teaching. Analogous to what the first stanza describes, it is essential to put our senses and our mind into a state of pralaya, of calm, so that understanding can come into our being. Meditate on it deeply and be in a state of eternity and universal sense in which the mind can be silent. A state of mind without prejudices or judgments, a clean and pure mind, as the golden stairs remind us. This first stanza describes the state of the one all during pralaya, before the first flutter of reawakening manifestation. Such a state can only be symbolized, because describe it is impossible. This stanza describes the state of non-being, for there is no manifestation yet. That absolute para-Brahman, that non-being, the one beingness, is the only reality. There is not existence yet, for to exist implies being outside of it. If we separate the word, the prefix ex means outside, so exist, outside of.
So the existence is circumscribed to the vehicles of manifestation with which we are identified. As long as we put our focus on the personal self, like the I am, etc., we will never leave the human level and realize the divinity within us. So I'll quote, "The idea of eternal non-being, which is the one being, will appear a paradox to anyone who does not remember that we limit our ideas of being to our present consciousness of existence." That is said in the commentary to the Shlok 7 of the first stanza. So it is a complex thing to grasp that state from the point of view of manifestation, but if we strive in study and meditation, we can gradually remove the veils. And we are going to stop here to hear the translation, Hindi and Tamil translations, and then we will go in depth with a small commentary or my commentary of each one of the shlokas of the first stanza. Thank you. Okay. Thank you, CATALINA ji. And I'll come to, I'm so sorry that I couldn't get the screen sharing on. Welcome, PREMLATA ji. How are you? It's okay, Taralji, no problem. Thank Good you. evening. Good evening, everyone. Thank Good you, evening. Taralji. Thanks. A small intro of PREMLATA ji. She is a computer and science engineer and has worked for 20 years in IT industry. बहुत बड़ा experience है और उन्हें interest है philosophy में और उन्होंने studying अपनी जो study है उसके अंदर Indian, European, Greek philosophy और theosophy को पिछले 5 साल से पढ़ा है. म्यूजिक और डांस में वो रुचि रखती हैं और वे वीणा भी बजाती हैं और उनका इंटरेस्ट थियोसॉफी में काफ़ी फैला हुआ है और वो चाहती हैं कि वो बहुत ही सिंपल तरीके से प्रचार प्रसार करे थियोसॉफी का ताकि वो एक बेहतर लाइफ और एक अच्छा स्पिरिचुअल पाथ फॉलो कर सके. आइए, आपका स्वागत है. प्लीज आपकी स्पीच का सारांश आप तमिल में दीजिए. थैंक यू. Thank you, Taralji. Good evening to all. Thank you, CATALINA ji, for the English translation. I could do some justice. I had only 2-3 days. Please advise if you find any difference in my translation. Thank you. I'm sure it will be perfect. Okay, I'll start now. மறைவியல் கோட்பாடு முதல் சாரத்தோட விளக்கங்களை நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். சீக்ரெட் டாக்டரின் தான் மறைவியல் கோட்பாடுன்னு சொல்லியிருக்கோம். அதோட முதல் சாரம் வந்து தன்னை அறிதலுக்கான பாதைக்கு நம்ம வழிவகுக்கும்னு நம்ம நம்பலாம். ஏன்னா அதை அதை படிச்சோம்னா நம்ம ரொம்ப ஆழமான பார்வையும் கிடைக்கும், ரொம்ப விசாலமான பார்வையும் நமக்கு கிடைக்கும். நம்மளாம் இதை பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்போம். as above so below, as within so without. That's hermetic philosophy மாதிரி. அதே மாதிரி தமிழ்ல எப்படி சொல்றோம்னா அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டம். அண்டா யூ கேன் விஷுவலைஸ். அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டம், பிண்டத்தில் உள்ளது அண்டம்னு தமிழ் சித்தர்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ரகசிய கோட்பாடை படிப்பது வந்து ஒரு பவுண்டரி, ஒரு எல்லையெல்லாம் நம்ம சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச கொஞ்சம் அறிவு, இந்த உலக அறிவை வச்சு நம்ம அவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டம் வந்து நம்மளால டிஃபைன் பண்ணவோ இல்லை வரையறைக்கவோ முடியாது. அது வந்து அனுபவபூர்வமா தான் தெரியணுமே தவிர வார்த்தைகள் நம்மளால விவரிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். பட் ஸ்டில் இப்ப நமக்கு புரிஞ்ச வரைக்கும் வந்து ஸ்பீக்கர் வந்து சொல்லியிருக்க அவங்களோட எக்ஸ்பிளனேஷனை இதுல கொடுத்துருக்காங்க. அதை நான் தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முயற்சி பண்ணியிருக்கேன். ஜயன் என்ற வார்த்தை வந்து சாதாரணமான மனநிலையை விட ஒரு தியானிக்கிற மனநிலையை குறிக்குது. சாதாரணமான நம்ம மனநிலையை வச்சு ஒரு சாதாரணமான புத்தகம் படிக்கிற மாதிரி நம்ம சீக்ரெட் டாக்டரினை அணுக முடியாது. அது வந்து ஒரு அளவுக்கு போய் தியான நிலையில இருக்கும் போதுதான் நமக்கு அதை வந்து அணுக முடியும். புரியறது அடுத்த லெவல். அணுக முடியறதுக்கே அது தியான லெவல் வேணும்னு சொல்றாங்க. நம்ம அஷ்டாங்க யோகா அதை பத்தி படிச்சிருப்போம். அந்த யமா நியமா அது மாதிரி
கான்டம்ப்ளேட்டிவ் இன்ட்யூட்டிவ் மைண்ட் வந்து அந்த தாரணா, தியானா, சமாதி அந்த 3 லெவல்ல இருக்கும்போது தான் நமக்கு நல்லா புரியும். அது மட்டும் இல்லாம நமக்கு உண்மைகள் தெளிவா நமக்கு வந்து சேரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த லெவலுக்கு போனா உள்ளுணர்வு, இன்ட்யூஷன், உள்ளுணர்வுன்னு சொல்றாங்க. இன்ட்யூஷன்னா உள்ள இருக்கிற டியூஷன், உள்ள இருந்து வர டியூஷன், நமக்கு உள்ள இருந்து வர நாலேஜ், வெளியில புத்தகத்தை படிக்கிறதுனால வர நாலேஜ் கிடையாது. இந்த சரணங்கள் வந்து பிரபஞ்சத்தோட எவல்யூஷன், அதாவது பரிணாம வளர்ச்சின்னு சொல்றாங்க தமிழ்ல. அது வந்து சுருக்கமா ஒரு சூத்திரமா இந்த சரணங்கள்லாம் சொல்லுதுன்னு சொல்றாங்க. அதாவது இந்த பிரபஞ்சம், தமிழ்ல பிரபஞ்சம், அண்டம், பேரண்டம், அகிலம், சூரிய குடும்பம், பால் பாதை ஒரு மில்கி வே, அகிலாண்டம், அண்டசராசம், இந்த மாதிரி நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கு. பிரம்மாண்டம் நம்ம படிச்சிருக்கோம், பிரம்மாண்டம், அகிலாண்டேஸ்வரி, இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த பிரபஞ்சத்தை நிறைய லெவல்ல குறிக்குது. அண்டசராசரம் இதெல்லாம். சோ இது எல்லாத்துக்குமே வர பரிணாம வளர்ச்சியும் ஆஸ் அபோ சோ பிலோ என்ற மாதிரி அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டம், அது வந்து நமக்கும் வந்து நுண்ணுயிர்ல இருந்து ஒரு பறவை, விலங்கு, நுண்ணுயிர்ல இருந்து பாக்டீரியா, வைரஸ் மாதிரி அந்த நுண்ணுயிர்ல இருந்து நம்ம மனுஷன் வரைக்கும், நம்ம விண்ணுலகத்துல இருக்கிறவங்க வரைக்கும், கோள்கள் வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் வந்து நம்ம வந்து அதை ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. சோ ஸ்பீக்கர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம வந்து இந்த விண்ணுலகம் இதை பத்தி அண்டவியல், அதாவது காஸ்மாலஜி, அண்டவியல் படிக்கும் போது இதை வந்து நம்ம எப்படி பரிணாம வளர்ச்சியில முன்னேறதுன்றத படிச்சு தெரிஞ்சுக்கலான்றது ஸ்பீக்கரோட ரொம்ப நல்ல கருத்து. அழகா அணுகுறாங்க. விழி சித்தாந்தம், இதய சித்தாந்தம், ஹெட் லேர்னிங் அண்ட் சோல் விஸ்டம், இது வந்து வாய்ஸ் ஆஃப் த சைலன்ஸ்ல வந்து நம்ம எல்லாருமே படிச்சிருப்போம். அதாவது மௌன வாக்குன்னு தமிழ் புக்கு. அதுல வந்து விழி சித்தாந்தம் வந்து இந்த வெளிப்புறமா அணுகிறவங்களுக்கு இந்த உலகத்தை, பூலோகத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான பொது பொருள், ஜெனரல் பொது பொருள். ஆனா இதய சித்தாந்தம் வந்து அது வந்து பூலோகத்தை இருக்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நமக்கு இருக்கிற அந்த 5 சென்சஸ், மனசு, இதை வச்சு எல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம், படிச்சுக்கலாம். இன்டெலெக்சுவல் நாலேஜ் சொல்றது இந்த பூலோக அறிவு, பிசிக்கல் நாலேஜ், அதை வந்து நம்ம சம்பாதிச்சுக்கலாம். ஆனா நம்ம மறைப்பொருள், மேலுலகம், மெய்ஞானம் என்ற அப்சல்யூட் ட்ரூத், மெய்ஞானம் என்றும் மாறாத நிலைத்திருக்க நித்தியமான ட்ரூத் நம்ம படிக்கணும்னா இதய சித்தாந்தம் தான் யூஸ் பண்ணணும். அது வந்து மறைப்பொருள், உலக மறை நூல்கள் சொல்லுவாங்க. வேதாஸ் வந்து மறை நூல்கள். மறை மீன்ஸ் லைக் இட் இஸ் நாட் ஈஸிலி விசிபிள், ஈஸிலி அப்ரோச்சபிள் ஃபார் அஸ். ஈஸியா வந்து நம்ம அதை வந்து அணுக முடியாது. அதுக்கு வந்து நம்ம கஷ்டப்படணும், நம்மளை ஒழுக்கப்படுத்திக்கணும், தூய்மையான மனசு வேணும். அப்பதான் அதை நம்ம மேலுலக விஞ்ஞானத்தை வந்து நம்ம படிக்க முடியும் அப்படின்னு வாய்ஸ் ஆஃப் சைலன்ஸ்ல சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த முயற்சியை வந்து ஸ்பீக்கர் என்ன சொல்றாங்க, நம்ம இந்த சீக்ரெட் டாக்டரின், இந்த மறைவியல் கோட்பாடு இல்ல ரகசிய கோட்பாடு படிக்கணும்னா நம்ம அந்த புத்தி நிலைக்கு நம்ம போகணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஐ ஜஸ்ட் ஆடட் 1 or 2 diagrams to make it little interesting for the other people. பகுத்தறிவு, டிஸ்கிரிமினேஷன், அது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். பொய்யில இருந்து மெய், ஃப்ரம் த ட்ரூத் அண்ட் த ஃபால்ஸ், எது நித்தியமானது, அனித்தியமானது, கண் கோட்பாடுல இருந்து இதய கோட்பாடு, அது வந்து கற்றுக்கொள்ளணும். மெய்ஞானம், ஆத்ம ஞானம் அடையணும்னா தூய்மையான உள்ளத்துல நம்ம அணுக வேண்டும். அப்பதான் உணர முடியும். தெரியறத விட அது வந்து உண்மைகள் வந்து நமக்கு தானா உள்ள வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆன்ம அறிவு பெறணும்னா அக ஒழுக்கங்கள், இன்சைட், புற ஒழுக்கங்களை விட அக ஒழுக்கங்கள், உள்ள இருக்கிற ஃபேக்கல்டிஸ், உள்ள இருக்கிற ஒழுக்கங்கள் நம்ம வந்து கடைபிடிக்கணும். அப்பதான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் டச் பண்ண முடியும். HPB வந்து புத்தி பிளேன்ல போகணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த பிரபஞ்சம் கூட நம்மள மாதிரி அது ஒரு உறக்கத்துக்கு போகுதுன்னு சொல்றாங்க. மகா பிரளயம், அந்த மாதிரி வெளிப்படுறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறத பரபிரம்மம், அக்ஷர பரபிரம்மம், வேதாந்த சித்தாந்தால டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ், சிவம் எல்லாம் சொல்றாங்க. பரபிரம்மம் என்றும் மாறாதவன், பிறக்காதவன், ஒரு வடிவம் இல்லை, நோ ஷேப், டுவாலிட்டி இல்லை, இரண்டற்றவன், அழிவு இல்லை, ஆல்வேஸ் இட்டர்னல், இந்த மாதிரி எந்த குணங்களும் இல்லாம, நோ குணம், அதுதான் வந்து நிர்குண பிரம்மன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
நம்ம வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மொழியில நம்மளால அதை வந்து சொல்லவே முடியாது, ஒழுங்கா அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவும் முடியாது, வர்ணிக்கவும் முடியாது. ஏன்னா நமக்கு இருக்கிறது வந்து ரொம்ப லிமிட்டட் நாலேஜ் ஆர் ஃபைனைட் நாலேஜ் ஆர் ஒரு வட்டத்துக்குள்ள இருக்கிற ஒரு நாலேஜ். இப்போதைக்கு நமக்கு வந்து இருக்கிற நாலேஜ் அதை வந்து இன்னும் நம்ம வந்து இன்னும் ஜாஸ்தி முன்னேறணும் அந்த நாலேஜ் இதெல்லாம் புரியறதுக்காக. அது இன்னும் நம்ம எவல்யூஷன்ல இன்னும் ஜாஸ்தி நமக்கு தெரியும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த நிர்குண பரபிரம்மன் அதை வந்து ஞான யோகத்தால மட்டும் தான் நம்ம அறிய முடியும். அதுக்கு நமக்கு வந்து வெளி ஒழுக்கங்கள் தேவை. அதுக்கப்புறம் மனசு நல்லா நம்ம வந்து தூய்மைப்படுத்தணும். அதுக்கப்புறம் இந்த அகங்காரம் அதெல்லாம் இருக்கவே கூடாது. ஆணவம், கர்வம், நிறைய லெவல்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் ஹியூமனிட்டி, ப்ரைடு அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அப்போதான் விடுதலை பெற்ற ஒரு ஆன்மாதான் மெய்ஞானம் ஆர் அப்சல்யூட் ட்ரூத். அதை வந்து நம்ம வந்து மங்களாக, அதாவது ஃபெயிண்ட், த வேர்ட் ஃபெயிண்ட் இஸ் யூஸ்ட், மங்களாக கொஞ்சம் தெரியும், உணர்ந்து கொள்ள முடியும். அது எங்க இருந்து வந்தது, எங்க இருந்து நம்ம போறோம், எங்க திரும்பி போனோம் அப்படின்றத அந்த அப்பதான் நம்ம தெரிய முடியும். அதே மாதிரி அந்த முதல் சரணத்துல சொல்லியிருக்க மாதிரி இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட். ஸ்பீக்கர் இஸ் சேயிங், என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம வந்து அந்த ஆழ்ந்து தியானித்து நித்திய நிலையில் மனம் எப்படி பிரளயம், அது வந்து எப்படி அமைதியா எந்த ஒரு இடையூறும் இல்லாம அந்த மாதிரி மனம் அமைதியா உணர்விலும் இருக்குதோ, அதே மாதிரி நம்மளும் ஒரு கண்டிஷன் பண்ணாம தீர்ப்புகள் இல்லாத மனநிலை, ரொம்ப தூய்மையான மனநிலை, ஒழுக்கமா இருந்த நிலையில நம்ம வந்து இதை வந்து புரிய நினைக்கணும். we should become one with the stanza. அது இந்த சரமானது இல்லாத நிலையை விரைவிக்கிறது. அதே மாதிரி நம்மளும் இல்லாத நிலையை, முற்றிலும் பரபிரம்மம் இல்லாத நிலையை அடையும் போது இதை நம்ம கொஞ்சம் உணரலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னு எக்ஸிஸ்ட் என்ற வேர்டு வந்து என்ன குறிக்குதுன்னா, இருப்பது என்பது வெளியே இருப்பது. நான் உணர்கிறேன், நான் என்று நம்மளை பத்தியே நினைக்கும் போது நம்ம வந்து தெய்வீகத்தை உணர மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Premlata ji, 2 more minutes to sum up first half. Okay, is it enough? Should I stop here? Yeah, it was still 8 slide. Okay, yeah, one more, 7 and 8. Okay. இந்த அக்ஷர பரபிரம்மம், இட்டர்னல் நான் பீயிங், அதை வந்து புரியறது வந்து கொஞ்சம் சிக்கலான விஷயம்தான். ஆனா அதை வந்து நம்ம படிப்படியா தியானத்திலையும் படிப்படியா திரைகள், த வெயில்ஸ் அகற்றலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த ஸ்லோகங்கள் வந்து தன்னறிவு பாதை, நம்மள உணர்ந்திருக்கிற செல்ஃப் ரியலைசேஷன் தன்னறிவு பாதையில வந்து நம்ம எப்படி அதை வந்து ஒப்பிட்டு நம்ம வந்து கத்துக்கலாம்ன்றது அடுத்து வர செக்ஷன்ல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ. Thank you, Premlata ji. Welcome, शिखर जी. शिखर जी का एक संक्षिप्त परिचय. उन्होंने नॉटिकल साइंस मुंबई यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस की उपाधि ली थी. मर्चेंट शिपिंग में थे. वॉलंटरीली रिटायर हुए 10 साल के बाद और अपनी एक इनर जर्नी पर निकल गए. उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन की 2008 में, और वासुमती अग्निहोत्री जी जो उनकी माताश्री है, उसके कारण वो थियोसॉफी के संपर्क में आई. और वे नेशनल लेक्चरर तो है ही इंडियन सेक्शन के, लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स वगैरह में भी भाग हमेशा लेते रहते हैं. सेंटर हैं वे अडियार के, और जितने भी वहाँ पर आजकल समारोह हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, स्पीचेस हो रहे हैं, कन्वेंशंस हो रहे हैं, उन सब के केंद्र में शिखर जी होते हैं. उनके कई आर्टिकल्स इंटरनेशनल मैगजीन में छपे हैं, जैसे कि द थियोसॉफीज, द इंडियन थियोसॉफीज, वेक अप इंडिया, फ्रेंच एंड स्पेनिश थियोसॉफिकल मैगजीन्स. और साथ ही में वे प्रज्ञा सी स्टूडियो के साथ बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, और यूथ की पूरी जिम्मेदारी इनके सशक्त कंधों पर है. धन्यवाद. आइए शिखर जी, हिंदी में अपना वक्तव्य दीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद तरल जी, और सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम. और आज के विषय पे आते हैं बिना कोई समय गंवाए. तो आज का जो विषय है वो बहुत गंभीर है और बहुत ही गहन है, जो कि आज के हमारी वक्ता कैटलीना जी ने लिया है, और वो है
आत्म साक्षात्कार के पथ के प्रकाश में सीक्रेट डॉक्ट्रिन का जो पहला छंद है उसके बारे में वो अपना व्यक्तिगत जो उनके विचार हैं वो शेयर कर रही हैं। क्योंकि सीक्रेट डॉक्ट्रिन जो है उसका अध्ययन जो है वो केवल ब्रह्मांड की ही एक व्यापक और गहरी दृष्टि नहीं प्रदान करता है, बल्कि साथ ही साथ वो व्यक्ति के स्वयं के लिए भी, जैसा मनुष्य का विधान है, मनुष्य की संरचना है, केवल दृश्य ही नहीं अदृश्य भी, उसके बारे में भी हमें सीक्रेट डॉक्ट्रिन में पढ़ने को मिलता है। क्योंकि कहा जाता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, एज अबव सो बिलो, जैसा अंदर है वैसा बाहर है। और सीक्रेट डॉक्ट्रिन का अध्ययन करने का मतलब है कि जिस तरह एक रहस्यवादी कवि प्रकृति के रहस्यों को अपने कल्पना शक्ति से, अपने ध्यान के द्वारा या अपनी अंतर समझ के सीमा पर जाकर अनुभव करता है, सीक्रेट डॉक्ट्रिन को अध्ययन करने का भी लगभग वही परिणाम आता है। और हालांकि जो इसमें हम पढ़ते हैं उनको हम शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी भाषा और समझ के सीमाओं के भीतर कुछ विचार आज हम लोग इस पे करेंगे। पहली बात तो ये कि जो ये सीक्रेट डॉक्ट्रिन है, जो स्टैंजास ऑफ ध्यान है, ध्यान शब्द का मतलब ही है कि ध्यान के माध्यम से या ध्यान से या गहन चिंतन के रूप में या ज्ञान के रूप में किया जाता है। इसलिए बहुत ही प्रथम आवश्यकता जो है कि इसकी समझ अगर हमें अनुभव करनी है तो हमें अपना जो दृष्टिकोण है बहुत ही गहन और ध्यानपूर्ण रखना होगा। तो इसमें यह उल्लेख किया गया है, यह जो पहला स्टैंजा है वो जो ब्रह्मांड का जो विकास है उसके बारे में एक अमूर्त फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं, उस फॉर्मूले के रूप में इसमें जो ब्रह्मांड का विकास है उसको बताया गया है। और यथोचित जैसा भी कहा, जैसा ऊपर वैसा नीचे, उसी प्रकार से जो जितना भी विकास क्रम हो रहा है, वो चाहे मनुष्य का हो, पौधों का हो, पशु पक्षियों का हो, हमारी छोटी सी पृथ्वी का हो, या जो प्लैनेट्स की चेन है, ग्रहों की चेन है जिसमें अर्थ एक छोटा सा पार्ट है, सौर यूनिवर्स का हो, आकाश गंगा का हो, या हम बढ़ते चले जाएं उस स्केल पे, उस सब पे वो फॉर्मूला लागू होता है। तो अगर इस अध्ययन को हम आगे ले जाएं तो हमें इससे केवल ब्रह्मांड की समझ ही नहीं आती, बल्कि एक छोटे से छोटे बैक्टीरिया या जो माइक्रोब्स हैं उनके बारे में भी हमें एक जानकारी प्राप्त होती है। और यही थियोसॉफिकल मूवमेंट के रूप में जो एक हमारी सर्विस है, जो हमारी संभावनाएं हैं कि हम इसको स्वयं जानें और दूसरों के साथ इसको हम शेयर करें, साझा करें। एक जो कुंजी है वो सीक्रेट डॉक्ट्रिन को अध्ययन करने के लिए वो HP ब्लवात्स्की ने बताई है, अंतः प्रज्ञा, इंट्यूशन, जो कि हम प्राप्त कर सकते हैं एक पवित्र और उन्मुक्त मन के द्वारा। भूमिका में HP भी पॉइंट आउट करती हैं कि हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जितने भी छंद हैं या जो स्टैंजास हैं वो हमारी आंतरिक क्षमताओं को, फैकल्टीज को अपील करते हैं या टच करते हैं, छूते हैं, ना कि हमारे फिजिकल जो हमारा ब्रेन है या हमारा जो कॉन्क्रीट माइंड है या निम्न मनस है उसको। और इसीलिए ये मानना है कि कोई भी अध्ययन जब हम इस तरीके का करें सीक्रेट डॉक्ट्रिन में, तो वो हमारे लोअर मन की जो कॉम्प्लेसेंसी है या प्रमाद है उसके हमें परे जाना होगा, तभी हम इस अध्ययन को कर सकते हैं। जैसा कि मास्टर KH ने कहा है कि जो ऑकल्टिज्म है, अर्थात जो गुह्य विद्या के सत्य और जो उसका मिस्ट्रीज हैं, रहस्य हैं, वो एक बहुत ही उच्च कोटि के आध्यात्मिक महत्व की एक संरचना है, जो कि ऐसा नहीं है कि वो केवल एक दर्शन है मात्र है, बल्कि वो बहुत प्रैक्टिकल भी है,
कि ऐसा नहीं है कि हम उसको केवल दर्शन कह दें जिसका हमारे दैनिक जीवन से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिकल भी है। लेकिन फिर भी ये केवल हम ऑलरेडी जिस चीज को जानते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि हम कुछ और जोड़ दे रहे हैं इंफॉर्मेशन, कि एक इंफॉर्मेशन के बाद और इंफॉर्मेशन हम ऐड करते चले जा रहे हैं, जैसा कि आधुनिक विज्ञान जो है वो कर रहा है कि एक फैक्ट के बाद एक नियम के बाद दूसरा नियम। बल्कि ये जो हमें ज्ञान दिया जा रहा है ये मनुष्य मानवता के प्रैक्टिकल जो उसकी दैनिक जीवन है उसमें उसका बहुत प्रभाव है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक्सक्यूज मी। और अध्ययन और ध्यान के द्वारा हम नेत्र सिद्धांत के स्थान पर हृदय के सिद्धांत को अनुभव कर सकते हैं। जैसा वॉइस ऑफ द साइलेंस में कहा गया है कि आई डॉक्ट्रिन एंड हार्ट डॉक्ट्रिन, कि कुछ चीजें हम केवल आंखों से देखते हैं लेकिन उनको गहरे से अनुभव करने के लिए हृदय की जरूरत पड़ती है। और इन शिक्षाओं को जो वैश्विक लेवल पे हैं उनको मानवता के लेवल पे अप्लाई करने के लिए सीक्रेट डॉक्ट्रिन एक तरीके से हमें ट्रेन करती है। लेकिन साथ ही वॉइस ऑफ द साइलेंस इस तरीके के अध्ययन करने से पहले हमें ये एक चेतावनी भी देती है कि इससे पहले हम ये जर्नी या यात्रा आरंभ करें, हमें अपने हृदय को पवित्र कर लेना चाहिए। इससे पहले कि हम पहला स्टेप लें, हमें सत्य और असत्य में, जो रियल है और अनरियल है, जो परमानेंट है और जो टेम्पररी है, उनको, और साथ ही साथ अपने मस्तिष्क से सीखने का जो हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और हमारी प्रज्ञा यानी सोल का जो विजडम है उसमें क्या अंतर है ये करना हम जान लें। और इसीलिए ये जो सीक्रेट डॉक्ट्रिन है इसके माध्यम से हमारी चेतना को बुद्धिक प्लेन, जो कि मनस प्लेन से हायर प्लेन है, उस तक उठाने का एक प्रयास है। क्योंकि केवल इंट्यूशन के द्वारा ही, प्रज्ञा के द्वारा ही हम जो सत्य है, जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसको प्राप्त कर सकते हैं, मन के द्वारा नहीं। तो जो स्टैंजा 1 है जिसको कि ब्रह्मांड की रात्रि भी कहा गया है, वो हमें उस अवस्था के बारे में बताता है जब जगत नहीं हुआ था, यानी महाप्रलय की स्थिति थी। महाप्रलय जहां पे कोई द्वैतपन नहीं था, जैसे कि पहले प्रस्ताव में फर्स्ट प्रोपोजिशन में कहा गया है कि वह तत्व जो कि सर्वव्यापी है, असीम है, अपरिवर्तनीय है, जिसपे हम कुछ भी अटकलें लगाना असंभव है, क्योंकि वो मनुष्य के मन के परे है। इसलिए उसको ना ही सोचा जा सकता है, ना ही उसको बारे में कुछ कहा जा सकता है। और इसी कमेंट्री, श्लोक 9 की कमेंट्री के स्टैंजा 1 में हम पढ़ते हैं कि चूंकि मनुष्य जो है वो अनुभवजन्य घटनाओं को छोड़कर किसी भी मामले में एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पाने में अक्षम है, इसीलिए वो जो हमारे अस्तित्व के ऊपर इतने सारे जो पर्दे पड़े हुए हैं, हमारे अस्तित्व अर्थात जो उस परम तत्व के पर जो पर्दे पड़े हुए हैं, उन्हें हटा पाने में सक्षम नहीं है। केवल वही मुक्त चैतन्य उस सोर्स को, जहां से सब आता है और जहां सब जाता है, उसका हल्का सा, एक बहुत ही हल्का सा अनुभव कर पाने में संभव है, जो कि उन्मुक्त आत्मा है। क्योंकि जो सीमित है वो कभी असीमित को अनुभव नहीं कर सकता। और इस छुपे हुए अर्थ को देख पाना असंभव है जब तक कि हम उस पर ध्यान न करें और आत्म पवित्रता के उस लेवल तक ना पहुंच जाएं जहां हमें सत्य सीधे दिखाई देने लगे। और जो ये गूढ़ सत्य हैं, इनको हम पहले ही बात कर चुके हैं, शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उनको अनुभव ही करना पड़ता है। यहां तक कि अपना जो हम मैंपन है उसको हम इतना महत्व देते हैं, उसको पूरी तरीके से हमें हटा देना की आवश्यकता होगी। तभी हम इस टीचिंग से, इस अनुभव से, इस जो टीचिंग है उसको अनुभव कर पाएंगे। पहले श्लोक के वर्णन के अनुरूप
हमें इस ज्ञान को समझने के लिए अपनी इंद्रियों को प्रलय अवस्था में लाना होगा। प्रलय अवस्था का मतलब हम लोग बहुत ही डिस्ट्रक्शन या विध्वंस से मान लेते हैं, लेकिन प्रलय अर्थात जहां सब कुछ लय अवस्था में है, जहां सब कुछ एक रूप हो गया है, वहां कोई तरंग नहीं है, तभी हम इस अवस्था में होंगे तो हमारा मन शांत होगा और हम प्रज्ञा से उसको अनुभव कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें उस पर गहन ध्यान करना चाहिए और उस अनंत काल और सार्वभौमिक अर्थ की स्थिति में हम इस अर्थ को समझ सकते हैं। एक ऐसा मन जहां पे कोई पूर्वाग्रह नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है और पवित्र और प्योर मन है। पहला जो श्लोक है वो प्रलय की स्थिति के बारे में वर्णन करता है, जो कि व्यक्ति मतलब मैनिफेस्टेशन से केवल एक पहले की अवस्था है। इस अवस्था को केवल रूप के द्वारा, सिंबल के द्वारा बताया जा सकता है, उसको वर्णन करना ऑलमोस्ट असंभव है। तो ये स्टैंजा जो है वो उस अवस्था को दर्शाता है जहां पे कोई बीइंग नहीं है, क्योंकि वहां पे अभी तक कोई व्यक्त जगत नहीं हुआ है, अभी कुछ व्यक्त नहीं हुआ है। तो वो परम ब्रह्म, परम तत्व जो कि केवल बीनेस हैपन जिसे हम कह सकते हैं, वही वास्तविकता इस समय है, क्योंकि कोई अभी एग्जिस्टेंस नहीं हुआ है। जैसा कि एग्जिस्ट शब्द का अर्थ भी एक्सप्लेन अभी किया था, क्योंकि जैसे ही व्यक्तिकरण होता है अर्थात मैनिफेस्टेशन होता है, तो जो व्हीकल्स हैं अर्थात जो उपाधियां हम ग्रहण करते हैं, उनकी कारण से हमारा जो अनुभव है वो लिमिटेड हो जाता है और हम फिर क्या, हमारा पूरा जो ध्यान है वो स्वयं पे चले जाता है कि मैं हूं, मैं अनुभव करता हूं, मैं फील करता हूं, एटसेट्रा। एंड और फिर ऐसी अवस्था में हम मनुष्य अवस्था को बड़ी ही मुश्किल से अलग हो पाते हैं और उस दिव्य सत्ता को अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि जो उस शाश्वत अव्यक्त अस्तित्व का जो विचार है, वन बीइंग, यानी वहां पे द्वैतपन है ही नहीं, उसके बारे में हम अनुभव नहीं कर सकते जब तक कि हमारा जो चेतना है वो, क्योंकि हम अपनी वर्तमान चेतना की अवस्था से उसको अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता जब तक कि हम अपने मन को सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त ना कर लें, क्योंकि ये बहुत ही एक कठिन अवस्था है उस स्थिति को, चेतना की स्थिति को अनुभव करने की। लेकिन अगर हम अपने अध्ययन और ध्यान में सिंसियरली लगें, हम धीरे धीरे उन जो पर्दे पड़े हुए हैं उन पर्दों को हम अपने सामने से हटाकर उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जो कि जिसे परम सत्ता या परम तत्व कहा गया है। धन्यवाद। Okay. Yeah, English only. Thank you. Okay. Okay, now let's look at some ideas derived from each one of the 9 slokas that compose this first stanza and its relevance to the path of self-realization. So the slok 1 says, the eternal parent Parabrahman, wrapped in her ever-invisible robes, had slumbered once again for 7 eternities. The poem mentions that space, the poem mentions that space is the one eternal thing that we can most easily imagine, immovable in its abstraction and uninfluenced by either the presence or absence in it of an objective universe, causeless cause of both spirit and matter. It means everything else is in a state of pralaya and manifested. It is like if we go to the Secret Doctrine, the disc before the point, that the invisible clothes are actually the seed of matter and had slumbered again because it is a cyclical process. There is something vastly higher and unknowable from which we come and to which we are destined to return. It's our destiny to return.
from the point of view of self-transformation. That gives us the hint that there is something bigger than us, a divine plan to which we should aim to consciously contribute and work. When stated in Shloka 2 that time was not, for it lay asleep in the infinite bosom of duration, it is making reference to a timeless principle. There is no sense of time, only a continuous experience of the now, in which one transcends all consciousness because it simply is. Light on the path says, live neither in the present nor in the future, but in the eternal. This giant weed of self cannot flower there. So, as stated in the commentary of Shloka 2, the present is only a mathematical line which divides that part of eternal duration, which we call the future, from that part which we call the past, both being an illusion. So there is only the eternal now. Time is only a mental construction, and it needs consciousness to be perceived. At this 0 point, that is prior to manifestation, there is not yet consciousness, there is not yet time. In the union, in the eternal present, the non-being, what remains is something that our senses cannot imagine, in contact with the primordial in which universal mind was not. For there were no celestial beings to contain, hence manifest it, as mentioned in Shloka 3. So during the long night of rest, Pralaya, when all the existences are dissolved, the universal mind remains as a permanent possibility of mental action. Shloka 4 says, the 7 ways to bliss were not. The great causes of misery were not. For there was no one to produce and get ensnared by them. There is no one to produce them because there is no duality yet. There is no desire yet. And therefore, there are no limitations of matter inherent that are inherent to manifestation. There is not yet that. Then the Shloka 5 says, darkness alone filled the boundless all. For father, mother, and son were once more one, and the son had not yet awakened for the new will and his pilgrimage thereon. This statement is expressed in the Bible like in the beginning, in the Genesis, in the book of Genesis of the Bible, we can find like a parallel expression. In the beginning, the raging ocean that covered everything was enfolded in total darkness. So that is like the way the Christian tradition expressed this state before the manifestation. Everything didn't exist yet and has ceased to exist. We have mentioned that it's a cyclical process. The 7 sublime lords and the 7 truths, as mentioned in the slok said in the 6th slok, had ceased to be, and the universe, the son of necessity, was immersed in Paranishpana, to be outbreathed by that which is and yet is not was. So here it's talking about a state where there are no expectations, there are no desires, or seeking of blessings or escape from suffering, and therefore the child of necessity of manifestation, was immersed in absolute perfection. There were no causes.
The third fundamental proposition of the poem reminds that the Secret Doctrine teaches the obligatory pilgrimage for every soul through the cycle of incarnation or necessity. That is what it refers to when it says the son of necessity. That necessity to come back in incarnation that is given by the desires, the expectations, etc., in accordance with the cyclic and karmic laws. But this gives us the hint in the light of self-transformation that once the pilgrimage ends, that child of necessity will no more exist and the being will merge with the absolute perfection. So on this slide, we can put our goal, our thought in that moment in which the child of necessity is no more and we will finally fulfill the divine plan. Okay. In the slok 7, it says, the causes of existence had been done away with. The visible that was and the invisible that is rested in the eternal non-being, the one being. These causes of separateness have been removed. The vehicles with which we identify ourselves no longer exist, meaning our physical vehicle, desires, etc. There is a state of non-being, that state of spiritual realization. And then slok 8 declares, alone, the one form of existence, stretched, boundless, infinite, costless, in dreamless sleep, alive, pulsated unconscious in universal space, throughout all presence, which is sensed by the opened eye of Dharma. It is a form of existence that is full. It is a state of non-knowledge that goes beyond any state of mind. It's a perfect state of being, of beingness, sorry. And this could be the answer when a stanza concludes asking in the 9th shloka. But where was Dhamma, the purified soul, when the Alaya, the soul of the universe, was in Paramartha and the great wheel was Anupadaka? Here we can go to Dr. Taimi. He compares this state of the entire stanza 1, that the night of the creation, to the number 0 that contains all numbers. It's like an ultimate principle, which is a harmonic synthesis of all opposites, and that integrates all the principles, the qualities, etc. 0 is the numerical sign of null value, is the number of nothingness. And nothingness is indivisible. You cannot divide 0. So from 0 comes the 1. Before the manifestation, as we read in the Secret Doctrine, there is the disk. And then comes the point in the center that is the beginning of the manifestation, which is the number 1, the beginning of manifestation. The first necessary presupposes something which, as per occultism, necessary derives from the causeless cause. If all existence is derived from the omnipresent principle through the unity center of Laya center, the essential practice of the spiritual life must be a perception of the unity manifested in all life and harmonious behavior in accordance with it. So also from the point of view of the self-realization, that show us as the first objective of the Theosophical Society stays, the universal brotherhood and unity of life, which has to go beyond our words to be a practice in our daily lives. So any serious student
or study, sorry, that we undertake of any passage of the Secret Doctrine involves a transformation on oneself, and in that sense, it is immensely practical, because it urges us to unfold our higher mental faculties, to prepare our being to access higher mysteries. So it's helping to develop our intuition, our higher mind. But not only that, also for us to understand how the universe works and how we can change our vision of the world and our relationship to that universe and whoever inhabit it, of any kingdom, of course. So in the commentary of Shlok 5, we read the following. How far we discern the light that shines in darkness depends upon our powers of vision. What is light to us is darkness to certain insects, and the eye of the clairvoyant sees illumination where the normal eye perceives only blackness. So depending on how serious is our study and our engagement to this practical living the theosophy, our perception will be wider and wider, but not for our own profit or for our own, oh yes, I can now understand so much and I know this, that so well, but for really apply it to make this unity of life and brotherhood of everything, of men and women alive. And I would like to, we are almost finishing, I would like to show this, this is a part of The Light of Asia by Sir Edward Arnold that says, O Amitaya, the books teach darkness was at first of all, and Brahma, soul meditating in that night. Look not for Brahma and the beginning there, nor him, nor any light, shall any gazer see with mortal eyes, or any searcher know by mortal mind. Veil after veil will lift, but there must be veil upon veil behind. And to remove those veils, we must use our intuition to lift veil after veil. And as written in the commentary of Shlok 1, stanza 2, so here we have finished the first stanza, but then this continue with the stanza 2. It is only, this is the commentary that Blavatsky makes on this first Shlok of the next stanza. It is only with a mind clear and undarkened by personality and assimilation of the merit of manifold existences devoted to being in its collectivity, the whole living and thinking universe, that one gets rid of personal existence, merging into, becoming one with the Absolute. So only with a mind clear and undarkened by the personality. Okay, that was what I wanted to share today. Of course, approaching to the Secret Doctrine is always a little bit challenging, and I only try to share my understanding, especially that inspiration that it produces me every time I get to read it. Is like something, as I told you at the beginning, like a poetical experience, transcendental experience. Namaste, Dhanyavad, Nandri. Thank you, Katrina ji, and it is really wonderful. Premlata ji, I am forwarding it to you for Tamil. Please go ahead. Thank you. Thank you, Katrina ji. Thank you. Continuing slide 9, continuing from slide 9. இந்த பரபிரம்மன் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத
அங்கிகளால் அதாவது ரோப்ஸ் அங்கிகளால் போர்த்தப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. 7 நித்தியங்களாக 7 எட்டர்னிட்டிஸ் மீண்டும் ஒரு முறை தூங்கி இருக்காங்க. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் படைப்பு, அதுக்கப்புறமா திருப்பி கரைதல், படைப்பு, கரைதல். இது வந்து ஒரு சுழற்சி மாதிரி, சைக்கிள் மாதிரி போயிட்டு இருக்குன்றதை இதுல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். விண்வெளி, சாதாரண விண்வெளி வந்து நம்ம வந்து எளிதாக கற்பனை செஞ்சுக்க முடியமான ஒரு அரூப விஷயம்தான். ஸோ இது ஒன்னொன்னும் நமக்கு தெரிஞ்ச சில பரிமாணங்கள் ஒன்னொன்னும் எப்படி இதுக்கு முன்னாடி, படைப்புக்கு முன்னாடி அன்மேனிஃபெஸ்டடா எப்படி இருந்தது அப்படின்றது இவங்க உணர்த்துறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்பேஸ், அது வந்து விண்வெளி, அந்த பரபிரமம், கண்ணுக்கு தெரியாத ஆடைகள், தூள பொருள்கள். அந்த தூள பொருள்கள் வந்து நமக்கு தெரிந்த இந்த தூள சரீரம் அந்த மாதிரி அப்படின்னு நம்ம வந்து நினைச்சுக்க கூடாது, அசியூம் பண்ணக்கூடாது. அது வேற மாதிரியான தூள பொருள், அங்கிகள். அது வந்து மீண்டும் தூங்கியது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா இது வந்து ஒரு சுழற்சி. அதே மாதிரி காலம், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் அப்புறம் டைம், அந்த 2 பரிணாமம், டைமென்ஷன்ஸ் சொல்றாங்க. காலமற்ற நிலை, ஏன்னா ஒரு எல்லையற்ற தூக்கத்துல இருக்கு. காலமற்ற கொள்கை, உணர்வு இல்லை, ஒரு தொடர்ச்சியான ஒரு இட்டர்னல் ஸ்டேட் அனுபவம், ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் அனுபவம் சொல்றாங்க. இது வந்து அனைத்து உணர்வையும் நம்ம கடந்து செல்லும் போது, மெடிடேஷன் சொல்லும் போது, அந்த கடந்த காலம், எதிர்காலம் எதை பத்தியும் நினைக்காம ஒரு மைண்ட் முனிவர்களால இருக்க முடியும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு தத்துவத்தை பத்தி பேசுறாங்க. நிகழ்காலத்தையோ எதிர்காலத்தையோ இல்ல கடந்த காலத்தையோ இல்லாம நித்தியமாக இருக்க பழகி கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து மெடிடேஷன்ல எல்லாம் சொல்லி தருவாங்க, தியானத்துல எல்லாம் சொல்லி தருவாங்க. அது கஷ்டமான நிலை. ஆனா அதை பத்தி தான் இதை பேசுறாங்க. ஆனா அதை நம்ம ட்ரை பண்ணோம்னா, முயற்சி பண்ணோம்னா, முக்கியமான கஷ்டமான ஒண்ணு அது நம்மளோட தான் என்ற எண்ணம், ஐ பிரின்சிபிள், தான் என்னுடையது, மைண்ட் அண்ட் ஐ அண்ட் மைண்ட், இதை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். அது வந்து அங்க வந்து இருக்க முடியாது, அந்த எட்டர்னல் ஸ்டேட்ல இருக்க முடியாது, நித்தியமான ஒரு மனநிலையில இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து யூனிவர்சல் மைண்ட். இப்போ ஸ்பேஸ் பார்த்தோம், டைம் பார்த்தோம். இப்போ யூனிவர்சல் மைண்ட் அந்த மனநிலையும் இல்லை. ஏன்னா அதை உணர்வு தேவையில்லை. ஒரு பூஜ்யமான ஒரு நிலை, உணர்வு, நேரம் எதுவும் இல்லை. ஏன்னா அதை கொண்டிருக்கும், வெளிப்படுத்தும் விண்ணுலகோரும் இல்லை, யாருமே கிடையாது. நீண்ட ஓய்வு போது அனைத்து இருப்புகளும் கலைக்கப்படும் போது, அன்மேனிஃபெஸ்டடா இருக்கும்போது, அந்த யூனிவர்சல் மைண்ட் ஒரு பிரபஞ்ச மன நடவடிக்கைனா நிரந்தர சாத்தியமாக இருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்க முடியுது. 7 ways to bliss or ஆனந்தத்திற்கான 7 வழிகள், மிசரி ஒரு துரதிர்ஷ்டத்துக்கான 7 காரணங்கள் எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா அதை வந்து உற்பத்தி செய்து சிக்க வைக்க யாருமே கிடையாது. ஆசை இல்லை, வரம்புகள் இல்லை, அந்த மாதிரி உருவாக்குறதுக்கும் யாரும் இல்லை. அதனால ஃபுல் இருள், சாந்தமான ஒரு இருள் மட்டுமே எல்லையற்ற அனைத்தையும் நிரம்பியது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஃபாதர், மதர், சன், அந்த மாதிரி எல்லாருமே ஒன்னா இருக்காங்க. ஏன்னா இன்னும் படைப்புக்கு முன்னாடி இருக்காங்க, இன்னும் படைக்க ஆரம்பிக்கல. இது வந்து பைபிள் ஜெனசிஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல கூட இருக்கு அப்படின்னு ஸ்பீக்கர் சொல்றாங்க. முதல்ல வந்து அந்த டார்க்னஸ், அந்த இருள் வந்து அனைத்தையும் உள்ள அடுக்கி பொங்கி எழும் ஒரு கடல் முழு இருளில் மூழ்கி இருக்குது அப்படின்றாங்க. 7 லார்ட்ஸ் ஆர் ட்ரூத்ஸ் ஆர் 7 இறைவன்கள், 7 உண்மைகள் எல்லாமே ஸ்தம்பித்து நின்று விட்டன. ஆசைகளோ துன்பங்களோ நம்பிக்கைகளோ இல்லாத ஒரு நிலை. காரணங்கள் எதுவுமே இல்லை, காரணமில்லா காரணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. காரணங்கள் எதுவுமே இல்லை, புரோயம்ல அந்த மாதிரி சொல்லிருக்காங்க. அதோட சுருக்கத்துல இந்த அன்மேனிஃபெஸ்டடா இருக்கும்போது அசையாது மற்றும் ஒரு புறநிலை பிரபஞ்சத்தின் இருப்பு அல்லது இல்லாமையால் பாதிக்கப்படாது. இறைமை மற்றும் தூள பொருட்கள் இரண்டிற்கும் காரணமற்ற காரணம் இருக்கிறது. மற்ற அனைத்தும் பிரளய நிலையில் வெளிப்படுத்தப்படாத நிலையில இருக்கு. இது புள்ளிக்கு முன் வட்டு கண்ணுக்கு தெரியாத சரீர ஆடைகள் பொருளில் விதை மாதிரி இருக்கு. இது வந்து ஒரு சுழற்சி ஒரு சைக்கிள். புள்ளிக்கு முன் வட்டு ஒரு டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த டிஸ்க் ஃபுல்லா இருளா இருக்கு. அந்த மாதிரி நம்ம நினைச்சுக்கணும், இமேஜின் பண்ணிக்கணும். இப்போ இந்த தன்னை அறிதல் பாதையில இது நமக்கு எப்படி
நம்ம பார்க்கலாம். இல்லை இது எப்படி நமக்கு செல்ஃப் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அதுல நமக்கு வந்து உதவுதுன்னா, ஒரு மிக உயரிய ஒரு பொருள், பெரியது பிரம்மம், பரபிரம்மம், நம்மளால ஒண்ணுமே வர்ணிக்க முடியாது. அதுல இருந்து நம்ம வரோம், திரும்பி அதுக்கு போறோம். இது வந்து ஒரு பிளான், ஒரு தெய்வீக திட்டம். அந்த மாதிரி செயல்படுது. நம்ம இது தானா செயல்படாம ஒரு பிளானா செயல்படுதுன்றதை நம்ம உணர முடியும். அது வந்து நமக்கு வந்து நம்மளோட பிரபஞ்சத்தோட நம்ம எப்படி இருக்கோம், எப்படி வாழ்றோம், எப்படி ஒற்று இருக்கோம், எப்படி என்ன நம்ம அந்த ரோல் பிளே பண்றோம், வாட் இஸ் த ரோல் தட் வி பிளே, எல்லாமே நமக்கு வந்து ஸ்லோவா புரிய ஆரம்பிக்கும். அது வியக்க வைக்கும். இட் இஸ் ஸ்டுபண்டஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு 18. இதுல இருந்து என்ன புரியுதுன்னா, ஒவ்வொரு ஆன்மாக்கும், எந்த ஆன்மாவும் இருந்தாலும் சரி, நம்ம கண்டிப்பா இந்த சம்சார பெருங்கடல்ல மூழ்கி, அந்த பிறப்பு இறப்பு அதுல மூழ்கி, மறுபிறவி, கர்மா, இந்த மாதிரியான விதிகள் ஒரு பிரின்சிபல், அதுக்கு வந்து நம்ம எல்லாருமே தள்ளப்படுறோம். அதுல இருந்து நம்ம வந்து எஸ்கேப் பண்ண முடியாது, அதுல இருந்து வெளியில ஈஸியா வர முடியாது. அது வந்து நம்ம உணர்த்துது இது இந்த சைக்கிள் ஆர் சுழற்சி. இப்ப காணக்கூடியது மற்றும் கண்ணுக்கு தெரியாத நித்தியமான அல்லது இருப்பில் தங்கியுள்ளது. இப்போதைக்கு நமக்கு எதுவுமே தெரியாத நிலையில இருக்கு. பிரிவினங்கள், காரணங்கள் எதுவுமே இல்லை. நம்ம அடையாளப்படுத்துற வாகனங்கள், அதாவது வெஹிக்கிள்ஸ் சொல்ற நம்மள சரீரங்கள், ஒவ்வொரு சரீரங்கள் ஒவ்வொரு நிலையில இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆஸ்ட்ரல், புத்தி, அந்த மாதிரி காசல், அந்த மாதிரி சரீரங்கள் கூட கிடையாது. இது வந்து ஆன்மீக உணர்தல் இல்லாத ஒரு நிலையில இருக்கு. அது வந்து ஒரு கனவில்லாத உறக்கத்துல வந்து நீண்டு தனியாக எல்லையற்ற ஒரு காரணமற்ற இருத்தலின் ஒரு வடிவம் நீண்டுள்ளது. சுஷுப்தின் அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ். அதுல வந்து ஒரு ட்ரீம்லெஸ் ஸ்லீப், கனவில்லாத ஒரு உறக்கத்துல ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா இதை இமேஜின் பண்ணி பார்க்கும் போதே, நம்ம நினைக்கும் போதே ஒரு மாதிரி ஒரு பீஸ்ஃபுல் ஸ்டேட் இருக்கிற மாதிரி நம்மளால உணர முடியுது. இது வந்து இந்த டாக்மா என்ற இன்னொரு திறந்த கண்ணால் உணரப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுல ஆக்சுவலி எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு, அது அப்புறமா நான் டிஸ்கஸ் பண்றேன். இது ஒரு முழுமையான இருப்பு வடிவம், எந்த மனநிலைக்கும் அப்பாற்பட்ட அறிவில்லாத நிலை, ஒரு முழுமையான இருப்பு, பீனஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பரமாத்மத்தில் இருந்த போதும், மகா சக்கரம் அனுபாதகா இருந்த போதும் டாக்மா எங்க இருக்குது அப்படின்னு முடிக்கிறாங்க. இத வந்து டாக்டர் தைம்னி சரணம் 1க்கு எப்படி பூஜ்யத்தை பத்தி ஒப்பிடுகிறார். ஒரு பூஜ்யம்ன்றது ஒரு எண், அது எல்லா எண்ணையும் எதிரெதிர்களில் கொள்கைகள், குணங்கள் போன்றவற்றை ஒருங்கிணைக்குது. அதுலதான் எல்லா எண்ணும் அடக்கும். எல்லா கொள்கைகள், எதிரெதிர்கள், குணங்கள் எல்லாமே பூஜ்யம் அடக்கும். பூஜ்யம் அது வந்து ஒரு பூஜ்யம்ன்ற ஒண்ணும் இல்லாத நத்திங்னஸ், ஒன்றும் இல்லாத அந்த பூஜ்யத்துக்கு அடையாளம். அது அந்த ஸ்டேட்டுக்கு வந்து, அந்த நிலைக்கு வந்து டாக்டர் தைமணி அதை வந்து ஒப்பிடுறாரு. இப்போ வெளிப்படுவதற்கு முன் வட்டு டிஸ்க் உள்ளது, பூஜ்ஜியத்தில் இருந்து ஒன்று வருகிறது, மையத்திலிருந்து ஒரு புள்ளி வருகிறது, அதுல இருந்து ஒரு பாயிண்ட் அந்த டிஸ்க்ல இருந்து, அதுதான் N1, வெளிப்பாட்டின் ஆரம்பம். அந்த 1 தான் வெளிப்பாட்டின் ஆரம்பம். பின்னாடி நம்ம படிப்போம் 1 becomes 3, அந்த மாதிரி பின்னாடி வர ஸ்டான்ஸால படிப்போம். முதல் என்பது இந்த மறைவியலோட காரணமற்ற காரணத்திலிருந்து வருகிறது, ஒன்றை அவசியமாக முன்னிறுத்துகிறது, அதுல இருந்து வருகிறது அப்படி சொல்றாங்க. இந்த மறைவியல் கோட்பாடு ஒரு சீக்ரெட் டாக்ட்ரைன் வந்து எந்த ஒரு தீவிரமான ஆய்வும் நீங்க மேற்கொண்டாலே, ரொம்ப தீவிரமா, ரொம்ப சின்சியரா நீங்க மேற்கொண்டாலே, கண்டிப்பா அது வந்து டிஞ்ச் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் ஆர் கொஞ்சமாச்சும் நம்மளோட பரிணாம வளர்ச்சி, நம்மளோட கான்சியஸ்னஸ் நம்ம கண்டிப்பா வளரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது வந்து கண்டிப்பா பாசிபிள், கண்டிப்பா நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா உயர்ந்த மன திறன்களை வந்து அது வெளிப்படுத்தும். நம்ம யோசிக்க அது வந்து வெளிப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதை வந்து நம்ம மேடம் கூட சொல்லியிருப்பாங்க, நம்ம யோசிக்க புது விஷயங்களை யோசிக்க பிரெயின் காவ் பண்ணும் பார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது இங்க எனக்கு ஞாபகம் வந்தது. அதேதான் ஸ்பீக்கர் சொல்லியிருக்காங்க.
இப்படி தனியாக கனவில்லாத உறக்கத்தில் எல்லையற்ற காரணமற்ற இருத்தலின் ஒரு வடிவம் நீண்டுள்ளது. வாழ்க்கை பிரபஞ்ச விண்வெளியில் சுயநினைவின்றி துடிக்கிறது. அந்த அனைத்தும் இருப்பு முழுவதும் டாங்மாவின் திறந்த கண்ணால் உணரப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனால் பிரபஞ்சத்தில் ஆலய பரமாத்திரத்தில் இருந்த போதும் மகா சக்கரம்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதுதான் படைப்போட சக்கரம். அனுபாதகா இருந்த போதும் டாங்மா எங்க இருக்கிறது அப்படின்ற கேள்வியை எழுப்பும் போதுதான் டாக்டர் தைமனி இதை பத்தி சொல்றாரு. நம்ம புரிதல், நம்ம புத்தி இதெல்லாம் அதோடவும் அண்டத்தோடவும் நம்மளோட தொடர்பு இதெல்லாம் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம். எப்படி ஒரு இருட்டுல வந்து ஒரு லைட் இருக்கும்போது அது நோக்குறவங்களோட பார்வையை பொறுத்து அந்த லைட்டை வந்து நம்ம கிரகிக்க முடியும். அந்த லைட் எந்த அளவுக்கு இன்டென்சிட்டி இருக்குன்றது பாக்குறவங்க இந்த சீயர் அவங்களோட பார்வையை வச்சு உணர முடியும். அது நமக்கு வெளிச்சம் என்பது சில பூச்சிகளுக்கெல்லாம் இருள் தான், இன்செக்ட்ஸுக்கெல்லாம் ரொம்ப டார்க்னஸ் தான், நமக்கு வெளிச்சமா இருக்கும். அதே மாதிரி சாதாரண கண்கள் கருமையை மட்டுமே உணரும் இடத்தில் மெய்ஞானிகள் கிளார்வாயன்ட் மாதிரி மெய்ஞானிகள் வந்து கண் வெளிச்சத்தை பார்க்கிறது. அந்த நம்ம வளர வளர நம்ம அகவழி பாதையில நம்ம வந்து வளர வளர கண்டிப்பா நமக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெரியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கடைசியில வந்து ஸ்பீக்கர் லைட் ஆஃப் ஏசியா அதை வச்சு முடிக்கிறாங்க. அதுல வந்து புத்தகங்கள் எல்லாம் இருளை கற்பிக்கின்றன. பிரம்மம் வந்து அந்த இரவில் ஒரே தியானம். அந்த பிரம்மத்தின் ஆதி அந்தம் சொல்றாங்க. அதெல்லாம் நீங்க வந்து தேடாதீர்கள். இந்த தூல கண்களால் இந்த உலகில் வாழக்கூடிய நம்ம புலன்களால் சென்சஸால நம்ம அதை வந்து தேட முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது வந்து நம்ம மனசை தூய்மைப்படுத்தி எண்ணங்களை தூய்மைப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல ஒழுக்கமான வாழ்க்கை, வெளி வாழ்க்கையும் ஒழுக்கமா இருந்து தேடுபவனால மட்டும்தான் ஒரு திரையா விலகும். ஒரு திரை விலக பின்னாடி திரை போயிட்டே இருக்கும். அதுவும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் விலகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தூய்மையான தெளிவான மனதுடன் மட்டுமே உணர்வு பூர்வமாக நம்ம உணர்வு பூர்வமாக பன்மடங்கு இருப்புகளின் தகுதியை ஒருங்கிணைத்தல் மூலமாக மட்டுமே பிரபஞ்ச அறிவு, தூய்மையான அறிவு, மெய்ஞானம் ஒருத்தருக்கு பரபிரம்மம் புரியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ பிரேமலதா जी. शिखर जी प्लीज कंटिन्यू इन हिंदी. थैंक यू तरल जी. थैंक यू प्रेमलता जी. सो अभी तक हम लोगों ने प्रथम श्लोक स्टैंजा के बारे में पढ़ रहे थे. तो उसमें कई श्लोक हैं. तो उनमें से जो 9 श्लोक हैं उनमें से प्रत्येक में कुछ विचार और उनकी जो प्रासंगिकता है आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. तो पहला जो श्लोक है वो ये कहता है कि जो अनंत माता पिता हैं यानी पर ब्रह्म, माता पिता पेरेंट कहा है, पेरेंट्स नहीं कहा है. पेरेंट मतलब एक केवल. वैसे तो हम यहाँ माता और पिता दोनों के मेलन से एक नेक्स्ट जनरेशन की उत्पत्ति होती है, लेकिन यहाँ पे माता पिता अलग नहीं है, केवल एक है पर ब्रह्म. और वो अपने अदृश्य वस्त्रों में लिपटे हुए पुनः 7 अनंत काल के लिए फिर सो गए थे. तो पुनः इसलिए कहा गया है क्योंकि एक चक्रीय कार्य है, चक्रीय प्रोसेस है, जो कि समय समय पर प्रलय है, फिर मैनिफेस्टेशन है, प्रलय है, मैनिफेस्टेशन है, ऐसा होता है. और जो प्रोम है यानी भूमिका है, वो इस बात को कहती है कि अंतरिक्ष या जो आकाश है, स्पेस, वो एक ऐसी शाश्वत चीज है जिसको हम बहुत आसानी से थोड़ा कल्पना करके समझ सकते हैं. उसके अमूर्त रूप को, निराकार निर्गुण रूप को, कि वो ना उसमें कोई मूवमेंट है और ना ही वो अंतरिक्ष में होने वाली किसी भी घटना से या उसके होने से या ना होने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. और इसीलिए वो प्रकृति और पुरुष दोनों का ही अकारा कारण है जिसे कहते हैं. और हर प्रत्येक जो उस समय स्थिति है वो अव्यक्त अवस्था में है, प्रलय की अवस्था में है. इसको चित्र में दिखाया जाता है कि जो डिस्क है, वो क्षेत्र जहाँ पे मैनिफेस्टेशन होने वाला है,
और उसमें एक जो पॉइंट बनता है पहले, तो उस पॉइंट यानी फर्स्ट लोगोस, उसके भी आने से पहले की जो अवस्था है वो इस श्लोक के माध्यम से बताई गई है। और जो अदृश्य वस्त्र हैं वो पदार्थ का बीज है, बीज है अर्थात उन्हीं से वो पूरा ब्रह्मांड का जो पदार्थ है, प्लेन्स हैं, बॉडीज हैं, वो सब बनती हैं और वो पुनः सो गई हैं। तो इसका मतलब है कि चक्रीय वो प्रक्रिया है। और हमारे जो मन है उसके विचार से कहीं ऊंचा और जिसको हम नहीं जान सकते हैं, बहुत ही ये उच्च और अज्ञेय अवस्था है जिससे हम आते हैं और जिस पे लौटना हमारी नियति है। और आत्म परिवर्तन के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए ये हमें एक हिंट देता है कि हमसे कुछ विराट है, एक दैवीय योजना है जिसमें हमें सचेतन होकर अपना सहयोग करना चाहिए और कार्य करना चाहिए। ये कहा गया है कि उस समय नहीं था क्योंकि वो ड्यूरेशन अर्थात जो अवधि है उसके हृदय में सोया हुआ था, जैसा कि श्लोक नंबर 2 में कहा गया है। वो यह उस समय की एक समय के बियॉन्ड, समयातीत, कालातीत अवस्था के बारे में बात हो रही है, जहां समय का कोई सेंस ही नहीं था, केवल वर्तमान भी नहीं, शाश्वत अभी, शाश्वत नाव, एटर्नल नाव का ही कंटिन्यूअस लगातार जो अनुभव है वो है, जो कि हमारी रिलेटिव जो कॉन्शियसनेस है यानी सापेक्षिक चेतना है उसके परे का अनुभव है। और इसीलिए लाइट ऑन द पाथ मार्ग प्रकाशनी कहती है कि ना ही वर्तमान में रहो ना भविष्य में, बल्कि शाश्वत में रहो, क्योंकि शाश्वत चेतना की जो अवस्था है यानी एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, परम चेतना, वहां पर ये मैंपन का जो पौधा है वो खिल नहीं सकता। और श्लोक 2 की कमेंट्री में ये भी कहा गया है कि जो वर्तमान है वो केवल एक गणितीय रेखा है जो कि शाश्वत अवधि के एक पार्ट को, एक भाग को जिसे हम फ्यूचर कह देते हैं, उसके दूसरे भाग से जिसे हम पास्ट कह देते हैं उसको बांटता है। लेकिन वो चाहे भविष्य हो, चाहे भूत हो, काल हो, दोनों ही एक इल्यूजन है, माया है। क्योंकि समय जो है वो हमारे माइंड ने बनाया है, मन ने बनाया है, और उस समय उसको परसीव करने के लिए चेतना यानी सापेक्षिक चेतना की आवश्यकता पड़ती है। सापेक्षिक अर्थात द्वैत, यानी मैं हूं और मैं कल, परसों, भूतकाल, भविष्यकाल के बारे में चिंता करता हूं। लेकिन उस जीरो पॉइंट पे, यानी जो शून्य अवस्था की, जो व्यक्त अवस्था से पहले का समय है, वहां ना सापेक्षिक चेतना है, रिलेटिव कॉन्शियसनेस, ना समय है, वहां केवल परम चेतना है, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। और उस अवस्था में, उस योग की अवस्था में, उस शाश्वत अवस्था में जहां पे कोई व्यक्ति नहीं है, कोई जीव नहीं है, केवल जीवन है, वो जिसे हमारी जो इंद्रियां हैं उनसे हम उसको अनुभव नहीं कर सकते हैं। और ऐसी अवस्था में वैश्विक मन, यूनिवर्सल माइंड नहीं है, क्योंकि वैश्विक मन को होने के लिए वो दिव्य प्राणी होने चाहिए जो उसको धारण कर सकें। और चूंकि वो दिव्य, अभी वो व्यक्तित्व या मैनिफेस्टेशन शुरू नहीं हुआ है, तो वैश्विक मन भी नहीं है। और विश्राम की इस लंबी रात के दौरान जब सभी अस्तित्व विसर्जित हो जाते हैं तो जो बचता है वो ये जो मानसिक क्रिया है उसकी पोटेंशियल फॉर्म में बचता है, लेकिन अभी है नहीं। श्लोक 4 कहता है कि आनंद के 7 मार्ग उस समय नहीं थे, ना ही दुख के महान कारण थे, क्योंकि ना उनको उत्पन्न करने वाला और ना उनमें फंसने वाला कोई था। उस समय केवल अकेले अंधकार ने ही उस विराट असीम क्षेत्र को भरा हुआ था, क्योंकि पिता, माता और पुत्र एक बार फिर पुनः एक हो गए थे, और पुत्र जो है वो अभी पुनः जागृत नहीं हुआ था नए चक्र के लिए, अपनी अनिवार्य तीर्थ यात्रा के लिए। यहाँ पे माता पिता परब्रह्म को कहा गया है, पुत्र अर्थात जो मैनिफेस्टेशन है, जो वर्ल्ड है जिसको हम कह रहे हैं, वही
एक दृष्टि से वो सन है या पुत्र है। इसी के मिलता जुलता बाइबल में भी एक कथन आया, कहा है कि पर शुरुआत में यानी आरंभ में जो महासागर है जिसने सब कुछ ढक दिया था, वह भी पूर्ण अंधकार में डूबा हुआ था। जेनेसिस 1 में उस समय सब कुछ एक लय अवस्था में हो गया था। न ही 7 उदात्त भगवान थे, न ही 7 सत्य थे, जैसा कि श्लोक 6 में वर्णित किया गया है कि सब कुछ समाप्त हो गया था। न ब्रह्मांड था, न अनिवार्यता का पुत्र अर्थात सन ऑफ नेसेसिटी था, जो कि उस समय उस परम निष्पन्न अवस्था में था, जहां जिसके द्वारा उसे बाहर आना तो है, लेकिन अभी वह जागृत नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं था। एक वो ऐसी स्टेट के बारे में बात हो रही है जहां पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, ना किसी से आशीर्वाद पाना है, ना किसी दुख से भागना है। और क्योंकि वहां पे द्वैत नहीं है, अद्वैत की अवस्था है, इसीलिए वहां कोई कारण नहीं है। और जो तीसरा प्रस्ताव है फंडामेंटल प्रोपोजिशन का, वो हमें याद दिलाता है कि जो सीक्रेट डॉक्ट्रिन है वो हमें बताती है कि जो अनिवार्य तीर्थ यात्रा है प्रत्येक जीवात्मा की पुनर्जन्म के चक्र के द्वारा, वो इसी चक्रीय नियम और कर्म के नियम के द्वारा होती है। और इससे हमें एक हिंट भी मिलता है कि एक समय ऐसा भी, हम अभी चूंकि जन्म पे जन्म लेके विकास क्रम में हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब हम ये इस तीर्थ यात्रा को पूर्ण कर चुके होंगे, और उस समय हमें फिर पुनः जन्म लेने की कर्म के नियम से, अपने बंधन से नहीं आना होगा, और उस समय हम एब्सोल्यूट परफेक्शन, पूर्णता के साथ हम होंगे। भले ही हमें दूसरे कारणों से लोक सेवा के लिए या किसी की या किसी दूसरे फॉर्म में निर्माण काया के रूप में आना हो, वो अलग बात है, लेकिन कर्म के बंधन से हमें नहीं आना होगा। श्लोक 7 कहता है कि अस्तित्व के कारण भी उस समय खत्म हो गए थे। वो जो दृश्य हैं वो भी, और जो अदृश्य हैं वो भी उस शाश्वत नॉन बीइंग में, अर्थात एक बीइंग या बीनेस में उस समय रेस्ट कर रहे थे। क्योंकि जो सेंस ऑफ सेपरेटनेस यानी जो द्वैतपन है वो खत्म हो गया था। जो उपाधियां हैं जिनसे हम अपने आप को जोड़ लेते हैं और अपने आप को अलग अलग महसूस करते हैं, ये मेरा शरीर है, ये दूसरे का शरीर है, जाति धर्म भेद लिंग किसी भी प्रकार से, वो उस समय कुछ भी नहीं था। केवल एक अस्तित्व था जो कि असीम अनंत कारणहीन है, वो फैला हुआ था, और जिसे कि डंगमा की खुली आंख से अनुभव किया जा सकता है। डंगमा अर्थात जो बहुत ही हाई लेवल पे जो स्प्लेनेटरी स्पिरिट्स हैं या प्योरिफाइड सोल कहा गया है, वो ही उनको अनुभव कर सकते हैं। तो ये अस्तित्व का एक ऐसा स्टेज है जो हमारे माइंड से तो हम नहीं अनुभव कर सकते, लेकिन जब हम माइंड के परे चले जाते हैं, बुद्धिक चेतना में, आत्मिक चेतना में, तब हम उसको अनुभव कर सकते हैं। डॉक्टर तैमनी इसी बात को स्टैंजा 1 में कहते हैं। उन्होंने इसको जीरो यानी शून्य अवस्था से कंपेयर किया गया। शून्य को हम समझ लेते हैं कि कुछ नहीं है, लेकिन शून्य का यह भी अर्थ है कि उसमें सब कुछ समाहित है, क्योंकि शून्य से ही सब कुछ, शून्य ही पूर्ण है और पूर्ण ही शून्य है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि शून्य में अगर हम कहें प्लस और माइनस जो है वो समता में है, तो उससे कितना भी पॉजिटिव निकल सकता है, एक से लेके अनंत तक पॉजिटिव, एक से लेके अनंत नेगेटिव, दोनों शून्य में समाहित हैं। और इसीलिए उन सब का सिंथेसिस जो है वो उसमें है। और कोई भी स्टडी अगर हम जो सीक्रेट डॉक्ट्रिन है उसको ले रहे हैं, उसमें सिंसियरली ले रहे हैं, सीरियसली ले रहे हैं, तो उसमें हमारे अंदर एक रूपांतरण होना अनिवार्य है। क्योंकि जब हम इस पे चिंतन मनन करेंगे तो हमारे स्थूल शरीर, एस्ट्रल बॉडी, मानसिक बॉडी में जो परिवर्तन होंगे उससे हमारा स्वभाव चेंज होगा। और इसीलिए ये बहुत ही प्रैक्टिकल है और
हम सभी को अपनी हायर मेंटल जो क्षमताएं हैं उनको यूज करने के लिए ये आमंत्रित करती है, ताकि हम उस गुह्य गायन को जान सकें। जैसा कि श्लोक 5 की कमेंट्री में लिखा गया है कि हम कितना दूर तक अंधकार में देख सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारे देखने की दृष्टि की क्या सीमा है। क्योंकि कई बार हमारे लिए जो लाइट प्रकाश है वो किन्हीं जीव जंतुओं के लिए अंधकार है, और जो दिव्य दृष्टा है वो प्रकाश देख सकता है, लेकिन हमारी दृष्टि से वो एक ब्लैकनेस या डार्कनेस दिखेगी। जैसे अगर जय कृष्ण मूर्ति को अगर कोई आम व्यक्ति देखता सी शोर पे, तो उसे एक पतला दुबला सा बहुत ही मेल न्यूट्रिशन व्यक्ति बच्चा दिखता, लेकिन उन्हीं को जब CW लेडबीटर ने दिव्य दृष्टि से देखा तो उनका जो ऑरा था वो इतना श्वेत प्रकाशवान था कि उन्हें बिल्कुल ही एक अलग चीज दिखाई दी। तो इसी संबंध में अंत में लाइट ऑफ एशिया जो है, जो कि सर एडविन ऑर्नोल्ड की एक रचना है बहुत ही सुंदर, उसका एक कोट यहाँ पे है कि, और ये हमारी दृष्टि की ही बात करता है कि उस समय अंधकार था, केवल ब्रह्म था जो उस अंधकार में ध्यान पूर्ण था। लेकिन अगर हम कोई भी व्यक्ति अपनी नश्वर आंखों से या नश्वर मन से उसको देखने का अनुभव करने का प्रयास करेगा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक पर्दे के बाद दूसरा पर्दा आता ही जाएगा, और उस पर्दे को हटाने के लिए हमें मन के बियॉन्ड जाना होगा, अपनी इंट्यूशन अंतःप्रज्ञा को जागृत करना होगा। और जैसा कि श्लोक 1 की कमेंट्री स्टैंजा 2 में जो कि है आगे, वो कहता है कि केवल एक क्लियर माइंड यानी स्पष्ट मन, जो कि हमारे मैंपन से अंधकारित नहीं हुआ है या उसमें कोई मिलावट नहीं आई है, और जिसने अपने अनेक जीवन केवल उस परम तत्व को जानने में लगाया हुआ है, उतना जब हमारे पास पुण्य या पारमिताएं आ जाएंगी, तब एक जो वो व्यक्ति है वो इस स्थिति में होता है कि वो परम तत्व के साथ एक हो पाए और उस अद्वैत को अनुभव कर पाए। जब वो इतनी साधना या इतनी ध्यान अध्ययन कर चुका होगा, तब उस अवस्था में उसको अनुभव कर पाएगा अपने लिए, जिसका यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद कैटलिना जी, शिखर जी और प्रेमा जी। वाकई में बहुत ही आत्मा को छूने वाली बात हो गई आज, और बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा तीनों का। मैं अब ओपन करता हूँ कि और कोई कुछ कहना चाहता हो, जोड़ना चाहता हो या कुछ प्रश्न पूछना चाहता हो। शिंदे जी हैं और सुमति जी भी हैं, हसमुख भाई तो हैं ही, हर्षवर्धन भाई। प्लीज गो अहेड। सब 1-1, 2-2 मिनट में अगर हम कहेंगे तो ज्यादा लोग भाग ले पाएंगे। तरल जी जी, કેટલાકને ગુજરાતીમાં આ સમજાય એટલા માટે બોલું છું। જે શબ્દ છે અંધકાર છે, જે શૂન્યમય છે, ઓ ઈ આ ઉ હુ, જે અંધકારમાં આ શબ્દ બોલાય છે બુક ઓફ ધ્યાનમાં, અને આદિ સનત સંખ્યા જે છે એક જ, અને શબ્દનો નાદ સ્વભાવતઃ 1 અને 9 છે, અને એની સાથે અરૂપ ચતુષ્કોણ છે। એટલે શું થયું કે આ અનંત વર્તુળ જે આપણે વાત કરી ને, અનંત વર્તુળમાં 3 પવિત્ર, 4 અને 10 એ અરૂપ વિશ્વ છે, અને પછી પુત્રો એના 7 યોદ્ધાઓ છે, અને 8મો એ ત્યજી દેવાયેલો છે, એ છે સ્વાર ભાસ્કર, એટલે જે સૂર્ય છે તે છે। 8મો ત્યજી દેવાયેલો છે, એને આદિ સનત એવું બ્રહ્માનું નામ છે, જે સ્વભાવતઃ માતા પિતા વ્યોમમાં વ્યાપે છે। It is really wonderful for me to have this illustration in Gujarati, so that our people in Gujarat should understand this matter very easily. This is the illustration which is highly connected with the plane disc. This plane disc, and second is the archaic symbol that shows the disc with a point within it. That is the differentiation. And in this periodical manifestations, it is ever eternal nature.
what just our Catalina and what he told in Hindi, that was really very wonderful. And that nature that is sexless, infinite, Aditi, that is what we call Aditi in that. So that is the point in the disk, and that is the potential space. So here, Shikharji made us understand about that potentiality. It is a transformation. Very nicely, he just told us about its symbolization and symbols also. It is a divine, immaculate mother nature within it. And therefore, it becomes a mundane cross. Lower earth, and that becomes a mundane cross. And humanity has reached to that third root race. So here in Secret Doctrine, we have also this subject of the root race. So that is also very important. Lastly, I must have one special symbol about that. That is the circumference when disappears, and that leaves only the cross. So it is a sign that fall of the man into matter that is accomplished. And the fourth race begins. And the cross within a circle symbolizes pure pantheism. When the cross is left uninscribed, it becomes phallic. And it has the same and other meanings also in Tao and everywhere. So what Shikharji made us understand is really very symbolical. And we must have this kind of knowledge. It is the knowledge wisdom. In esoteric Buddhism also, this kind of understanding is found. So we have to ponder very deep into this, and we can understand this secret doctrine. By reading the book of Dhyan, we can have some 5 or 6 elements, and those elements will make us very strong in our own understanding. So let us illustrate without thinking on one thought, without having any kind of outer knowledge, but within the knowledge that we have to find out what we understand, and that becomes real theosophy. So here I understand very nicely, and I congratulate Catalina, Shikharji for your Hindi translation. And Premala, you just spoke in Tamil Nadu very nicely. You know, the Tamil language, that sounds like Sanskrit sometimes. So really, I could understand certain things. Thank you very much for my remarks. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for being patient and listening. Premaji, you also wish to add something, if you just said to me. Yeah. While studying this, whatever Catalina ji has presented, I was trying to recall the book Space and Consciousness. I came to know only through these sessions about the author also. That was very good, and we were easily relatable. So we should have a study based on that also. And the same Thiruvalluvar in Tamil, he talks about 10 degrees of knowledge. And Vallalar, he talks about 7 veils. So I couldn't take much notes or diagrams due to paucity of time. I had only 2 days to study this itself. It was very, very difficult to translate. Luckily, Google helped me. So if I get time, I will definitely make a note and send it across. Okay, so time is given. You select the day and come again with your speech. Sure. I will do it in English. Thank you, Shikharji. Thank you, Catalina ji. And really, Premaji, it was really nice. Thank you, Premaji. Shindeji, Hasmukh Bhai, whoever can, just 1-2 minutes, and then we will go towards the end. I think, this golden secret doctrine is only a reference book. You cannot read the whole book at a time or any time in your lifetime. So take one stanza at a time, meditate upon it regularly, and you'll see that the inner meaning will start coming out. Take one stanza, one sloka, and then meditate on it. So that becomes a theme for meditation. That way, probably something will come out of nowhere, which you don't know, and you don't even have to profess it, nor do you have to prove it. It comes from within. And this is the book I'm studying, Book of the Golden Precept. And only once another, but then, again, it is the knowledge is so vast. So you sometimes get baffled. Yes. Yeah, thank you, Hasmukh Bhai. Thank you. Yes. Thank you.
Thank you, Catalina. Very nice subject. So you have nicely explained, selected. Catalina. Title of the subject itself is attractive, because both secret doctrine is also attractive and self-realization is also the aim of everyone. So this title is very nice. We have selected, explained very nicely with reference to stanzas of dhyana and secret doctrine. And you kept with the aim of self-realization. Shikhar also explained in Hindi, which is really understandable. In simple manner, he made it to understand. Both of you presented very nicely. I am very happy to listen both of you together. Thank you. Prema, I heard first time in Yes. Tamil. I don't understand much Tamil, but I am happy that somebody is speaking about secret doctrine in Tamil. We have some theosophical books translated in Tamil. Yes, I was reading Voice of Silence in Tamil. Yeah. And therefore, I definitely appreciate your way of understanding and explaining. Thank you very much. Thank you so much. This Sir. Next time I'll do a better self-realization job. needs to be, even Harshvardhan Seth also explained all these things. But what I think, self-realization needs to be our goal. Yes, it is true. And for that, HPB makes it clear, not only in the secret doctrine or stanzas of dhyana, but in many of her articles, she writes about or emphasizes about purification for right perception. So if you want to Atma-jnana or self-realization, you should have this right perception or unveiled spiritual perception. She used that term. The perception, it is not veiled by any, any veils. That is what Shikharji explained. HPB also says it is possible only to the liberated spirit. That is what Catalina shown in one of the her presentation writings of the HPB. That HPB says it is possible only to the liberated spirit. And we know spirit is involuted into matter, and it is therefore she emphasizes simultaneous right efforts are needed, that is of yoga discipline or Raja Yoga discipline, of material spiritualization on one side, that is from the side below, and expression of spirituality from above, that is at material level, means materialization of the spirituality. Only such liberated spirit, if we take one sentence of the HPB, liberated spirit can only have this spiritual realization. Yes. So only such liberated spirit is able to faintly realize, not perfectly, faintly realize, she used that term, faintly realize the nature of source. And therefore she emphasizes union of individual soul with the oversoul. And it is true that the finite cannot receive the infinite. So human being can faintly realize, and this needs to be our aim. Self-realization is our aim, and in this, stanzas of dhyana and secret doctrine definitely guide us. And both Catalina and Shikhar tried to focus this to all of us. Thank you very much once again to giving such a excellent talk. Thank you. Thank you, Shinde ji. Taral ji. जी. नमस्कार तरल जी, मैं कुछ ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती हूँ। मैं आपकी वाणी को ही पुकार रहा था सुषमा जी, बोलिए।
इतने गूढ़ ज्ञान को कैटलीना जी ने, शिखर जी ने और तमिल में इतना सुंदर प्रस्तुति की। तो मुझे आज एक बात शिखर जी की समझ में आई कि प्रलय का तात्पर्य उथल पुथल नहीं है, बल्कि लहरों का समाप्त हो जाना है। और यही बात ऋग्वेद के नासदी सूक्त में कही गई है कि सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था, सत भी नहीं, असत भी नहीं, अंधकार भी नहीं, प्रकाश भी नहीं, छुपा था क्या कहाँ कुछ पता नहीं। यानी वो बीनेस की स्थिति थी, है की स्थिति थी। और जब बीइंग की स्थिति आई तब सारा ये द्वैत बना। और वो फिर से बीनेस की स्थिति में हम कैसे जा सकते हैं, इसको मिस्टिक पोएट्स ने कहा है, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेरा है, समंद समाना बूंद में शोकत हेरा जाए। ये तो सब सुनते हैं कि बूंद समुद्र में समा गई, लेकिन समंद समाना बूंद में शोकत हेरा जाए। तो जब हम अपने को एकदम उसमें डुबो देंगे, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेरा है, हम खुद खो गए, तभी वो हम में समा जाता है। और ये बात कबीर ने बहुत दूसरे ढंग से भी कही, इस घट अंतर बाग बगीचा इसी में सृजन हारा, इस घट अंतर 7 समंदर इसी में 9 लाख तारा, इस घट अंतर पारस मोती इसी में परखनारा, इस घट अंतर अनहद गर्जे इसी में उठत खुआरा, कहे कबीर सुनो भाई साधु इसी में साईं तुम्हारा। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमको अपने को खोना होगा। और जो शिखर जी ने कहा कि कोई दूसरा ज्ञान नहीं दे सकता, वो ज्ञान हमको खुद अपने ध्यान से ज्ञान से प्राप्त हो सकता है। तभी गालिब ने कहा, ये बात कही गालिब ने कि आगही घर न सही गफलत ही सही, जो कुछ भी हो अपनी खुद ही सहो, बुद्धिमानी नहीं सही तो गफलत ही सही। लेकिन जब हम उस रास्ते पे चलकर उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और तभी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और वो ध्यान के माध्यम से, कॉन्टेम्पलेशन के माध्यम से, पॉन्डर ओवर करने के माध्यम से, इंट्रोस्पेक्टेशन के माध्यम से तब हम उसको पा सकते हैं। तो बहुत एनलाइटेंड और बहुत थॉट प्रोवोकिंग लेक्चर था। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों वक्ताओं को और तरल जी को भी खास तौर से कि नए नए वक्ता को इतने सुंदर विषय को लेकर आते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सुषमा जी। और 8:15 बजने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से अगर कुछ और खास बात न बची हो तो हम समापन की ओर चलते हैं। शिखर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, क्लोजिंग सर। केशवर जी आप क्लोजिंग प्रेयर करिए तो अच्छा रहेगा। अतुल जी कहीं चले गए हैं, तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि क्लोजिंग प्रेयर। थैंक यू। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, न कर्णं न जीवा न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः, चिदानंद रूप शिवोहम 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 शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, न वा सप्त धातु न वा पंचकोश, न वाक्पाणि पादौ न चौपस्थ पायुः, चिदानंद रूप शिवोहम 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 शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोह, मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः,
चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न वा संगतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। थैंक यू किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। और 7 मार्च को होली है, मतलब होली का दहन, और संगीतमय होली के गीत, थियोसॉफी के गीत के साथ हम मिलेंगे अगले मंगलवार को। सो बी देयर टू सेलिब्रेट होली ऑन 7th March. Thank you. Bye. Thank you, Taral ji. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you all. Where is Yana?